Good afternoon, all dear students. Last time we had started a new chapter, lesson number 16, heredity and variation. In this chapter, today I am going to teach you what is heredity. Heredity means transfer of characteristic from parents to offspring is called heredity. It is due to heredity that puppies are similar to dog and squabs are similar to pigeons and infant are similar to human being. इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर्स है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं, इसकी वजह से पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इनहेरिटेड ट्रेड एंड एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रेड। तो देखो, हाउ डू स्पेसिफिक ट्रेड और कैरेक्टरिस्टिक अपीयर इन ऑर्गेनिज्म। जो स्पेसिफिक ट्रेड होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो ऑर्गेनिज्म में कैसे अपीयर होता है। तो देखो, ये जो आंसर है हमें इस थ्योरी में मिल जाएंगे। थ्रू देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग, देयर आर सम डिफरेंस टू। These similarities and difference are all of the effect of heredity. Let us study two mechanisms of heredity. Information necessary for protein synthesis in the cells is stored in DNA. जो प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन होता है वो DNA में स्टोर होता है। The segment of DNA which contain all the information for synthetic of particular protein is called gene. जो DNA फॉर्म होता है, इंफॉर्मेशन जो स्टोर किया होता है DNA में, वो जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स होता है वो किससे बनता है, जीन से बनता है फॉर दैट प्रोटीन। इट इज़ नेसेसरी टू नो द रिलेशनशिप ऑफ दीज प्रोटीन्स विथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। To understand the concept of heredity, let us consider the characteristic of plant height. We know that there are growth hormone in plant. Increase in height of plant depends upon the quantity of growth hormone. The quantity of growth hormone produced by plant depend upon efficiency of the concentrated enzyme. Uh, Efficient enzyme produce a greater quantity of hormone due to which height of plant increase. तो जो एफिशिएंट होता है एंजाइम का, वो क्या होता है, ग्रेटर अमाउंट में वो प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से जो हाइट होता है प्लांट का वो बढ़ता है। हाउएवर इफ द एंजाइम्स आर लेस एफिशिएंट, अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ हार्मोन इज प्रोड्यूस लीडिंग टू स्टंडिंग ऑफ प्लांट। तो कुछ जो हार्मोन्स होता है वो स्टंडिंग ऑफ जो प्लांट होता है वो प्रोड्यूस करता है। अभी हम क्या देखेंगे, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं। इधर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के जो क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर दिया है। तो देखो, इसमें दिया है बायलोप स्ट्रक्चर, मतलब क्रॉस के जैसे दिख रहा है। ऊपर का जो आर्म है उसको पी आर्म कहा जाता है, बीच में जो होता है जॉइंट उसको सेंट्रोमर्स कहा जाता है, और नीचे का जो आर्म्स होता है उसको क्यू आर्म कहा जाता है। ये जो आर्म है ये DNA से बनते हैं। तो देखो, द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कैरीज हेरिडिटी कैरेक्टर्स इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कैरी करते हैं उनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये जो क्रोमोसोम है ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स कैन बी clearly seen under the compound microscope. Genes which contain the information about hereditary characteristics is coded form are located on the chromosome. ये जो जीन्स होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन कंटेन होता है, और ये जब हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कोड करते हैं तो ये क्रोमोसोम में लोकेट होते हैं। ईच स्पेसीज हैज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर एक स्पेसीज में स्पेसिफिक नंबर के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ DNA एंड इट अपीयर डम्बेल शेप्ड मिडवे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देयर इज
constricted region on each chromosome, it is called primary constriction. तो ये जो डीएनए होता है वो डम क्रोमोसोम ये डीएनए से बना हुआ होता है और इस क्रोमोसोम का जो शेप होता है शेप डम्बेल शेप होता है और जो मिडवे जो जब सेल डिवीजन होता है तब देयर इज़ अ कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑन ईच क्रोमोसोम में एक कंस्ट्रिक्टेड रीजन होता है ये उसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं और सेंट्रोमर कहते हैं बीच में, ठीक है। दिस डिवाइडेड द क्रोमोसोम इनटू टू पार्ट, एक सेंट्रोमर क्रोमोसोम को टू पार्ट में डिवाइड कर देता है और ईच पार्ट इज कॉल्ड एन आर्म, और ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। द सेंट्रोमर्स हैज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन इन ईच क्रोमोसोम, तो सेंट्रोमर का स्पेसिफिक पोजीशन होता है इन ईच क्रोमोसोम में। डिपेंडिंग अपॉन दिस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो ये जो सेंट्रोमर है सेंट्रोमर के पोजीशन से जो क्रोमोसोम है वो 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो हम देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, उसके पहले क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो हम देखने वाले हैं एक वीडियो में और उसके टाइप भी वीडियो में ही देखने वाले हैं। तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ये क्या होता है अब इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। We are asked to fit a thread of 1 meter in this small box. It will be easy if we simply coil the thread and place it inside. Did you know that a similar approach is taken by our cells? Let's see how. We know that the long stretch of DNA is coiled to a great extent to fit inside the tiny nucleus. This process of coiling gives rise to the chromatid structure. It's a thread-like mesh that we find in the nucleus of a metabolically active cell. The chromatids gain a typical classical structure which looks somewhat like this. It's seen during cell division. And these are nothing but the chromosomes. But tell me, do all chromosomes look exactly like this? Do all the 46 chromosomes look the same? If yes, then why do we say that there are 23 pairs of chromosomes? What helps us categorize these chromosomes as pairs? Well, all chromosomes are not exactly like one another. They come in types depending upon their structure or shapes and functions. The first basis for classification is shapes. We know this is the structure of a typical chromosome. And is this a single chromosome? That's right. The difference is that this chromosome is not duplicated, while this one has a duplicated copy attached to itself. So these are the duplicated sister chromatids which are attached to the same chromosome. Now to understand the types, let's first understand the typical structure. Here, these two regions are called the arms of the chromosome. This arm is named as the P arm and this is known as the Q arm. So how do we recognize which is the P and which is the Q arm? Is it based on their positions? No, it depends on the size. The smaller arm is the P arm while the larger one is the Q arm. So this chromosome has one P and one Q arm, while this one has two P and two Q arms. Now let's focus on this chromosome structure. Can you guess what the structure is called to which the arms are attached? Well, this knot-like structure is called centromere. It's the portion of DNA that acts as a link between the two sister chromatids. But that's not its sole purpose. Its major function is the attachment of spindle fibers during the cell division process. And let me tell you one more interesting use of the centromere. It's the position of the centromere that helps us categorize the chromosomes into 4 types. The 4 types include metacentric, submetacentric, acrocentric, and telocentric chromosomes. Let's have a look at the structures of each type. Aren't these simple to understand? This one is called metacentric type. As we can see, the centromere is placed almost exactly at the center. The two arms seem almost of the same length. We can say that the centromere is placed somewhat in the middle of the complete structure. Now,
जो सेंट्रल के कंप्लीट सेंटर में सेंट्रोमियर होता है उसको हम मेटासेंट्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सेंटर के ऊपर अगर सेंट्रोमियर होता है तो उसमें ऊपर के दो आर्म्स शॉर्ट रहेंगे, नीचे के जो आर्म्स है वो बड़े रहेंगे, उनको सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। और जो थर्ड है एक्रोसेंट्रिक, वो पूरा टिप पोर्शन में जो सेंट्रोमेयर जो होता है वो टिप पोर्शन में क्या होता है, लाए होता है, तो उसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। और जो टीलोसेंट्रिक होता है उसमें ऊपर के आर्म ही नहीं होते हैं, उनको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, सिर्फ पूंछ का पार्ट होता है। ठीक है, दोज आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। The next type is the submetacentric. Here, the centromere is placed slightly away from the center. As a result, the two arms of the chromosome appear unequal. The next type is the acrocentric. In this, the centromere is seen almost towards the end region. The term acro in Greek relates to peak. Thus, the name acrocentric refers to the type where the centromere is near the terminal region. Lastly, what we see is that the centromere is present at the extreme end. That is, the centromere is placed at the telomeric region. Hence the name telocentric. However, these chromosomes are not found in humans. The human karyotype lacks telocentric chromosomes. But what is karyotype, you may ask? Well, it's one way of representing all the chromosomes found in a cell. This is how chromosomes are classified on the basis of their structures or shapes, to be precise. Now let's have a look at the other type of classification. This is a much simpler type of classification. Here, the chromosomes are classified whether they are autosomes or sex chromosomes. Now, what could these be? This is a representative image of a typical human karyotype. The chromosomes that pair from 1 to 22nd are called autosomes. That is, they are not the sex chromosomes. To be precise, they have got no function to deal with the sex of the individual. The last pair, however, determines the sex of the person. So, if the two are identical, that is, both are X and X, then the individual is a female. And what if both are different? In such a case, when one chromosome is X and the other is Y, the individual is a male. This pair is the sex chromosomes. So the chromosomes which help in determining the sex of an individual are sex chromosomes, or even called allosomes. The others, which are from 1st to the 22nd pair, are not the sex chromosomes. This makes them the autosomes. Both contain genes that code for proteins which make up our body. Now that we've understood the various types of chromosomes, can you tell me what helps in determining the sex of an individual? Is it only the chromosomes? Or is it some other factor too? Tune into the next part to understand the interesting concept of sex determination. This was our today's lecture, student. I hope you understood what is chromosome and what are the types of chromosome. Okay, you should read once at home. Okay, और आज का जो होमवर्क है आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ड्रॉ करने हैं और उसका इंफॉर्मेशन लिखना है। थैंक यू, बाय बाय।